Hello everyone, my name is Javed and we are into the lecture number 5 of our SQL series that I have started last week. And in our previous lectures, we have talked about distinct statement, select statement, and count function. And today we'll be talking about where clause, or you can name it where statement. What where does it? It allows us to put a condition on any column for the rows to be returned. Okay? Where and select statement are the two statements that you are going to be using with all the SQL queries that you come across with, and these are used to filter out the rows from the columns. Okay, and I'm going to give you some examples as well, but before we do that, we'll have to discuss few operators that that we'll be using with the where statement, and these are comparison operators: equal to, greater than, less than, less than equal to, greater than equal to, or not equal to. These are comparison operators because these can be used to compare numbers and strings so that we can get a desired result that we're looking for. And there are logical operators as well that will be coming across with. These are and, or, and not. And is used to apply on two conditions, and when both the conditions are satisfied, it can return a result as true, or is used to apply with conditions and can return true when any of the condition is satisfied. Not is just opposite of and or. If the conditions are true, it's going to return the result as false. Okay, now let's take a look at this example. I have two columns here, name and color. I have inserted some data into the name column and some data I have inserted into the color column. If I tell you to retrieve the data, uh, if I tell you to retrieve the data from a name column where my name is Javed, how are you going to write that query? So you are going to write select name. Okay, name is the column name, from table name where name is Javed, and the output is going to be Javed and Javed because there are two entries with this name. If I tell you to retrieve a name with Javed and color red, this is how you are going to apply it. You are going to use and operator with it. Select name from table name where name is Javed and color is red. Output will be Javed only at that time because there is only one combination that exists. That exists in the table with these two parameters. Javed and red is only once, and there is another Javed, but the color is green at that time. Okay. Now what we can do is we can directly head on to our PG admin tool and do some activities practically there. So this is my PG admin, and I'm going to use a select statement here. Select asterisk means retrieve all the columns from a table from, let's say, customer. ठीक है, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, these are the columns that are in this table, and these are the rows that I have inserted into the table. And now if I wanted to retrieve a name from this column, first name, where first name is equal to Jared, how are you going to write it? So you are going to write select star from customer. Okay, where first name equals to, and आपको स्ट्रिंग्स हमेशा कोट्स में डालना है. ठीक है, JARED Jared. ठीक है, अब इसको बंद करेंगे हम और इसको एक्सिक्यूट करेंगे. ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया. इस टेबल में Jared नाम का बंदा एक ही है. ठीक है, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट निकल के आ गया. ठीक है, अब अगर हम लिखेंगे कि मेरे को इस कॉलम में से सारे नेम्स निकाल के दे दो जिनका फर्स्ट नेम है मैरी. लेट्स सी हाउ मेनी. So there is only one name as well with Mary Smith. Okay, now what we are going to do is we are going to use another table that I have in my database. Let's start from film is one of the databases that I have in my database. तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा तो ये हमारे पास डेटा आ जाएगा. ठीक है, ये इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम है, उनके नीचे जो है नंबर ऑफ़ रोज़ है. ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेरे को निकाल के दे दो आप
रेंटल रेट मेरे को निकाल के दे दो जिनका वैल्यू है ग्रेटर दैन 2.99, ठीक है, ग्रेटर दैन 2.99। अब हम इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर डाल देंगे। आप लिखोगे, ओ सॉरी, आप ऐसे लिखोगे, दैट मी एक्सक्यूट इट अगैन। सो आप क्या करोगे, आप इसको ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे, इस क्वेरी को अगर आपको बोलेगा कि मेरे को वैल्यू निकाल के दे दो 2.99 से ज़्यादा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फिल्म वायर रेंटल रेट इज ग्रेटर दैन 2.99। तो ये क्या करेगा, ये आपको सारे वैल्यूज निकाल के देगा जिनका रेंटल रेट है 2.99 से ज़्यादा, 4.99, ठीक है, 0.99। ये 2.99 और 0.99 को एक्सक्लूड करेगा, जितने भी वैल्यूज़ 2.99 से कम हैं उनको एक्सक्लूड करेगा ये। अब देखते हैं, रेंटल रेट में हम जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द वैल्यू दैट आर ग्रेटर दैन 2.99, ठीक है। यहाँ पे खाली आपको 4.99 दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आपको कोई बोलेगा कि मेरे को निकाल के दे दो रेंटल रेट्स जिनका वैल्यू है ग्रेटर देन 2.99 एंड, ठीक है, एंड उनकी रेटिंग है आर, ठीक है, एंड उनकी रेटिंग है आर। अब यहाँ पे आप सिंपली एंड डाल दोगे, एंड क्या डाल दोगे, रेटिंग, RATING रेटिंग, RATING रेटिंग इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खाली जितनी भी दूसरी रेटिंग्स है वो नहीं दिखेंगी, खाली आपको आर मिलेंगी। वैल्यू 4.99 है और उनकी रेटिंग है आर, ठीक है। ये हो गया, एंड स्टेटमेंट भी हम लोगों ने लिखा दिया, ठीक है, कंपैरिजन और एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करो, ठीक है, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाले वीडियोस में हम और डिस्कस करेंगे वायर स्टेटमेंट को। ये आज हमने बेसिक चीज़